हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8। द चैप्टर नेम इज द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, आपको यहाँ पर स्टार्टर एक्टिविटी दी गई है। सी द पिक्चर एंड कंप्लीट सेंटेंसेस गिवन बिलो टू डिस्क्राइब द एक्शन टेकिंग प्लेस इन पास्ट। आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और बताना है कि ये जो एक्शन है ये पास्ट में ही कंप्लीट हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट वन, राजेश इज गोइंग होम, ही डैश प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट वन, आई एम रमन, आई डैश सुरेश इन द मार्केट, आई सॉ सुरेश इन द मार्केट। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने कुछ पास्ट टेंस रिलेटेड वर्ड्स यूज किए हैं। ओके, so let's start the chapter. So the first topic is past tense. The past tense is used to describe actions that occurred in the past or conditions that existed in the past. Past tense describe करता है उन action को जो past में हुए थे, occur हुए थे, ठीक है। The past tense has 4 forms. Past tense के 4 forms है। एक है simple past tense, फिर है past continuous tense, फिर है past perfect tense and then past perfect continuous tense. तो चलिए जानते हैं हर एक past tense के बारे में। So the first one is simple past tense. फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पर आपको दिया है फॉर्मेशन एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जैसे कि फर्स्ट है आई प्लेड, ईडी लग जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस फॉर्म में है। देन नेगेटिव में आई डिड नॉट प्ले, इंटेरोगेटिव डिड आई प्ले, ठीक है, डिड आ जाएगा इधर। नेक्स्ट थिंग, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड आई नॉट प्ले। नेक्स्ट वन, वी प्लेड, वी डिड नॉट प्ले, डिड वी प्ले, डिड वी नॉट प्ले। नेक्स्ट, यू प्लेड, यू डिड नॉट प्ले, डिड यू प्ले, डिड यू नॉट प्ले। नेक्स्ट वन, ही शी इट प्लेड, he she it did not played, did he she it played, did he she it play, then did he she it not play. Now here you can see in the box affirmative sentences. The affirmative sentence is formed by using the past tense of the root form of the verb. हम past tense use करें of the root form of the verb का affirmative बनाने के लिए, जैसे कि I played for example. Okay, next one is negative sentences. The negative sentences are formed by using did not and the root form of the verb. Negative sentence हम बना रहे हैं by using the did not और root form of the verb, जैसे कि for example I did not play. Next is interrogative sentences. The interrogative sentences are formed by placing did before the subject. Subject से पहले हम did को लगा रहे हैं, जैसे कि for example did I play और last में question mark. Next one, interrogative negative sentences. The interrogative negative sentences are formed by using did before the subject. Subject से पहले क्या है, did है, and not before the verb. Verb से पहले not है. For example, did I not play? Now let's see uses of the simple past tense. The simple past tense is used to express actions or events that took place a particular point of time in the past and are over now. मतलब हम उसके लिए यूज करते हैं वो एक्शंस के बारे में जो पास्ट में ही हो गए थे कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम yesterday. Now next thing is to express some past habits. कुछ past habits को express करने के लिए हम यूज करते हैं simple past tense को. For example, we usually swam in the river for hours. Next thing is, when we want to express some past habit, we often use words like yesterday, last week with the simple past tense. तो जब भी हम express करते हैं past habit को, तो हम कुछ ऐसे words use करते हैं जैसे कि yesterday, last week और किसके साथ, with the simple past tense के साथ, ठीक है। Now student, इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है। Now the next type is past continuous tense. फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पर आप टेबल देख सकते हो, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आई वाज ईटिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो वर्स वर आएगा इधर, ठीक है, जो वर्स है वो सिंगुलर के साथ आएगा, ठीक है, और वर्ड जो है वो प्लूरल के साथ आएगा। ओके, और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। सो आई वाज ईटिंग, आई वाज नॉट ईटिंग, वाज आई ईटिंग, वाज आई नॉट ईटिंग, वी वर ईटिंग, वी वर नॉट ईटिंग, वर वी ईटिंग, वर वी नॉट ईटिंग, देन यू वर ईटिंग, you were not eating, were you eating, were you not eating. Okay, then he she it was eating, he she it was not eating, was he she it eating, was he she it not eating. Okay, now इसकी explanation आपको यहाँ दी गई है। Affirmative sentences. The affirmative sentence is formed with was/were plus ing form of the root form of the verb. Okay, for example, Roma was singing. तो आप देख सकते हो was यूज किया है सिंगुलर के साथ और ing फॉर्म यूज किया है, ठीक है। Next one is negative sentences. The negative sentences are formed by using not between was, were.
नॉट को यूज किया है किसके बीच में, was were के बीच में, एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में. फॉर एग्जाम्पल रोमा वॉज नॉट सिंगिंग. ठीक है, was और singing के बीच में नॉट का यूज किया है. Now next one is interrogative sentences. The interrogative sentences are formed by placing was were before the subject. Was were को पहले रखा है subject से, जैसे कि for example was Roma singing. Okay. Now next is negative interrogative sentences. The negative interrogative sentences are formed by putting was were before the subject, subject से पहले रखा है, and not before the present participle और not को before the present participle. जैसे कि for example was Roma not singing. Okay. Now let's see uses of past continuous tense. The past continuous tense is used to describe an action or event that was progress in the past. एक action और event को describe करना जो progress में चल रहा था past में. For example, Mahima was singing. Next one, to express an action continuing at some point of time when another event took place. एक action जो चल रहा था कुछ point of time के लिए, फिर उसके बाद दूसरा कोई action take place करता है. For example, I was doing my homework when father called me. Okay. Now next thing is to express two or more actions going on at the same time. दो या दो से ज्यादा action जो है वो चल रहे हैं उसी same time में. For example, while I was studying, my sister was watching TV. तो दोनों चीजें जो है एक साथ चल रही है. Now स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. Now the next type of past tense is past perfect tense. Formation of the past perfect tense. यहाँ पर आप देख सकते हो affirmative, negative, interrogative, negative interrogative. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर had का यूज किया गया है और जो थर्ड फॉर्म है वर्ब की वो यूज की गई है. जैसे कि I had eaten, I had not eaten, had I eaten, had I not eaten. Next one, we had eaten, we had not eaten, had we eaten, had we not eaten. You had eaten, you had not eaten, had you eaten, had you not eaten. Next one, he she it had eaten, he she it had not eaten, he she it eaten, had he she it not eaten. So here affirmative sentences, the affirmative sentences are formed with had plus past participle form of the verb, that is the third form of the verb. For example, we had finished our homework. Okay, next is negative sentences. The negative sentences are formed by using not after had. Had के बाद not लगाया गया है. For example, we had not finished our homework. Next one, interrogative sentences. The interrogative sentences are formed by placing had before the subject. Subject से पहले हमने had लगाया है. For example, had we finished our homework? Next is negative interrogative sentences. The negative interrogative sentences are formed by placing had before the subject. Subject से पहले हमने had लगाया है and not before the main verb. और not हमने main verb से पहले लगाया है. For example, had we not finished our homework? Now student, here you can see uses of the past perfect tense. The past perfect tense is used to describe an action or event that was finished at some point of time in the past. उस एक्शन और इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करना जो कुछ टाइम पीरियड में हुआ था पास्ट में. फॉर एग्जाम्पल, द वर्कर्स हैड बिल्ड द हाउस. नेक्स्ट वन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगिन इन द पास्ट. उस एक्शन को डिस्क्राइब करना जो कंप्लीट हो गया था और उससे पहले जो कि एक एक्शन होने वाला है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड. ओके, नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट विच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन इन द पास्ट. एक एक्शन को एक्सप्रेस करना जो कि कॉज बन चुका था दूसरे एक्शन का. फॉर एग्जाम्पल, द वुड कटर वॉज क्रशिंग बिकॉज ही हैड लॉस्ट हर एक्स. ओके, नाउ स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव. आई हैड बीन, यहाँ पर बीन आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, हैड आएगा. ठीक है, I had been working, I had not been working, had I been working, had I not been working. Next one, we had been working, we had not been working, had we been working, had we not been working. Next one, you had been working, you had not been working, had you been working, had you not been working. Then he, she, it had been working, he, she, it had not been working, had he, she, it been working, had he, she, it not been working. Okay. Now here you can see affirmative sentences. The affirmative sentences are formed with had plus been plus ing form of the root form of the verb. For example, it had been raining since
last night. Okay. Next thing is negative sentences. The negative sentences are formed by putting not between had and been. Had और been के बीच में not लगा दिया है. For example, it had not been raining since last night. Next one, interrogative sentences. The interrogative sentences are formed by placing had before the subject. Subject से पहले हमने had लगाया है. For example, had it been raining since last night? Now next is negative interrogative sentences. The negative interrogative sentences are formed by placing had before the subject. Subject से पहले हमने had लगाया है and not before been, और not हमने लगाया been से पहले. For example, had it not been raining since last night? Now here you can see uses of the past perfect continuous tense. So the past perfect continuous tense is used to talk about an action that was going on for some time in the past and was completed in the past. उस एक्शन के बारे में बात करना जो चल रहा था पास्ट में और वो कंप्लीट हुआ है पास्ट में ही. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वेटिंग फॉर मंथ्स. नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस एक्शन और इवेंट विच वॉज गोइंग ऑन और फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस. एक वो एक्शन और इवेंट के बारे में बात करना जो चल रहा था कुछ टाइम पीरियड तक, फिर उसके बाद मतलब किससे पहले, दूसरे एक्शन होने से पहले. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स बिफोर शी मेट मी. ओके. नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. एक रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करना पास्ट में, जैसे कि आई हैड बीन आस्किंग फादर फॉर मनी. नेक्स्ट वन, to express an action that began before the time of speaking in the past and stopped before the time of speaking or continued up to it. मतलब एक एक्शन को एक्सप्रेस करना जो शुरू हुआ था बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने से पहले पास्ट में, और वो रुक गया था बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने से पहले ही. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. नाउ स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.